Hello everyone, so we are in Bukhara State Medical University situated in Uzbekistan. Well known for its infrastructure. It has got a 47.83% of passing rate of FMGE, and all of you, let's go inside and have a walkthrough of what the campus looks like from inside. We are in the Bukhara State Medical University now, and here are some of the Indian students, so let's hear from them directly about their experiences. Hi everyone, my name is Anaya Khan. I am from Kota, Rajasthan, India. Okay, Anaya, what made you choose Uzbekistan to study medicine here? Uzbekistan has a lot of cheaper options for as compared to Indian colleges. How is the quality of teaching here in your? I personally think the quality is way better than anyone around because the teachers are very particular about what they are teaching, and the course is very vast, but they make sure we read everything. And yes. Hi Akib, where are you from and आपको कितना टाइम हुआ अभी उज़्बेकिस्तान आए हुए? माझे नाव आकिब मनसूर पटेल आणि इथे येऊन मला आता सध्या 4 महिने होत आहेत आणि मी सोलापूर महाराष्ट्रात राहतो. ओके, तो 4 महीने आपको हुए, जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे आए हुए. तो आपको हाउ डू यू लाइक द कंट्री सो फार? उझबेकिस्तान देश मला तर खूप आवडला. म्हणजे इथले वातावरण, इथले लोक एकदम सपोर्टिव्ह आहेत, चांगले. आणि इथले लोकल जे लोक आहेत त्यांनी भी इथल्या इंडियन स्टुडंट्सला चांगलं सपोर्ट करतात. तो यहाँ पर इधर कैंपस में कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं एंड हाउ आर यू लाइक गोइंग अलोंग विद देम? 1000 स्टुडंट्स तर आहेत फर्स्ट इयर मध्ये आता. ओके. तर मग आता सगळ्यांसोबत चांगलं इंटरॅक्शन चालू आहे. ओके. हाँ, म्हणजे सगळे एकमेकांना सपोर्ट करतात. इंडिया में यू आर हैविंग ओनली लाइक फाइनल एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम, बट हियर इन दिस लाइक जो आप आज पढ़ रहे हो आपको अगली क्लास में उसका वाइवा देना है. अगर आप वाइवा नहीं देते हो तो आप आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका पिछले वाला वाइवा भी रह जाएगा और आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो स्टूडेंट को रोज का रोज पढ़ना ही पड़ेगा, वो ढील नहीं छोड़ सकता. अगर छोड़ेगा तो फिर एट द एंड बैक लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया होता है अगर आपके टॉपिक्स के वाइवा पूरे नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते हो. ओके, इफ आई आस्क यू कि आपने इंडिया चूज क्यों नहीं किया एंड व्हाई डिड यू चूज उज़्बेकिस्तान टू स्टडी योर मेडिसिन? वन टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव हियर. क्योंकि मेन जो मोटिव है, पढ़ाई तो चलो हर जगह होती है, पर यहाँ पे जो मशीनरीज है वहाँ इंडिया में आने में 10 या 15 साल लगेगी. जैसे हमारे यहाँ पे स्टिमुलेशन सेंटर है, तो इंडिया के किसी हॉस्पिटल में आपको देखने को नहीं मिलेगा. लाइक CPR मशीन जो है उसके अंदर 3 लाइट जलती है, ग्रीन, येलो, रेड. अगर आप परफेक्ट प्रेशर लगा रहे हो तो ग्रीन लाइट शो करती है, बट इंडिया में आप जो एक डेड बॉडी पे करते हो तो आपको पता नहीं इंसान जिंदा हो पाएगा या नहीं, पर आप यहाँ पता कर सकते हो प्रैक्टिस करके. I want to ask you one thing. So you came here from Magnum Educare, right? So how was the company with you and how did the whole process go? Were they picking up your calls and how smooth was the process when you were coming from India to Uzbekistan? So दिल्ली से ही हमारे साथ में मैम ने ज्वाइन किया था हमको. देन वो हमारे साथ ताशकंद तक थे. यहाँ पे आके हमको सानी सर ने ज्वाइन किया. देन हमारे साथ वो बुखारा तक थे. Okay. एंड यहाँ पे भी आके 2-3 दिन तक उन्होंने हमको अच्छे से सेट किया है. Myself Dr. Rashmi Atul Joshi. I am working here as an associate professor in the Department of Medical Chemistry and Biological Chemistry from last year, and I am teaching the Indian students in English. Let me tell you, from last 2 years I have been coming to this place, institute, especially as a parent, just to see that how my child is working here or studying here. So this place, this country basically, especially Bukhara, if I say personally, it's very safe for girls. And also the country, or you can say the state, is a more disciplined one. Being an old lady like me, I always get a seat in the bus. This is the first, impression of the country. Right. All people are good here. The institute has dedicated teachers. Okay. They are well aware of their subject. They are well aware of the students' problem. We have a separate section of students' welfare also, and personally they care for each and every student. See, the basic mode of teaching is always in English, right? And the students here, they are more or less very hard working also, what I have found. They live in the hostels in the first year, and they are dedicated to this, because everybody has come with a dream to become a doctor here. Right, either to fulfill their parents' dream or somebody have their own dreams also, and the for students it's round the clock. Right. The punctuality of the time, I think they follow here, and it is compulsory also. So that is the important part. What about the accommodation facilities and the food facilities? Are they good? Like, do you get Indian food here? Yes, all time we get Indian foods, and taste is almost like a same like Indian. Okay, and how much time have you spent here? अभी आपको कितना time? It has been like
3.5 months since. 3.5 months. So if I ask you what does a typical day in your life looks like, what would you say? Typical day is like we have classes from 8:30. We have gaps between the classes, and generally we have classes till 4. But sometimes we have classes till 6. Then we go to college, go to hostel. Then we do our dinner and all. Then And then we you study. sleep. Then we sleep, and then again college. Moving further, जो medium of instruction follow होता है यहाँ पे वो क्या follow करता है? प्रोफेसर तर सगळे इंग्लिशमध्येच बोलतात आणि सगळे चांगले सपोर्टिव्ह आहेत, चांगले टाइम टू टाइम वायवा होतात सगळ्यांचे. So is it safe for people here? हाँ बिल्कुल सेफ है, मतलब टाइम लिमिट की कोई इशू नहीं है. रात को 10 बजे तक आप इन और आउट हो सकते हो. और मैस का ऐसा है डिफरेंट मैसेज जैसे आपको अच्छी लगे. और फूड एकदम इंडियन है. अगर आप साउथ से हो तो साउथ मैस लगा सकते हो. डिफरेंट कंट्री से हो तो अच्छा, there are different messes available for different cities. If I ask you about the subjects here, what curriculum has been followed which is different from India? लाइक बेसिकली हमें 3 महीना हुआ है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन सब्जेक्ट हैं लाइक एनाटॉमी, मेडिकल बायो, मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल फिजिक्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक उज़्बेक लैंग्वेज, जो कि टीचर बहुत अच्छे हैं सिखाने में, तो आपको दिक्कत नहीं है. तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी अलग से सिखाई जाती है? लैंग्वेज अलग से सिखाई जाती है. उज़्बेक हिस्ट्री है जिसके 2 टीचर डिफरेंट पढ़ाते हैं, सेमिनार एंड थ्योरी. एंड फिर डिफरेंट लेक्चर लाइक इंडिया यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल फ्रॉम 3rd ईयर, बट हियर यू कैन गो फ्रॉम 1st ईयर. सब्जेक्ट्स आर लाइक सर्जिकल पेशेंट केयर, सर्जिकल चाइल्ड केयर, थेरेप्यूटिक पेशेंट केयर एंड थेरेप्यूटिक चाइल्ड केयर. These are the first semester subjects. Whenever you're getting the MBBS degrees here, are these valid in India as well, and can you continue your practice there? Yeah, this is NMC और WHO approved university. So आप लोग जाकर FMG भी दे सकते हैं, एंड U Assembly एंड अलग अलग कंट्री के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आप अपीयर कर सकते हैं. This is the computer lab. Here we do our practicals, and they teach us everything we need to know about the IT sector and the machinery around here. Maternity ward. Here we have different types of dummies on which we can practice different gynecological structures, and here we can see many dummies like this. Here we have the impregnant woman, and let me take you in the CPR room. So this is basically our CPR setup, and here we can practice and measure the judgment of how to we give the CPR. Like there are in this machine there are lights also, red, green and blue. The light shows how much pressure we give to the patient, so that's why the rib doesn't damage and the patient will be safe. This is the setup of basically a replica setup of operation theatre. This institute has its own hospital infrastructure. Bukhara State Medical Institute has proper Indian mess and hostel facilities for all the students coming from India. Indian faculties are also available in the institute for providing NMC coaching. So if you are planning to take admission and pursue your MBBS in this university, talk to Magnum Educare and get your enrollment right now.